गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। हमारे साथ संजय दीक्षित जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे क्योंकि उनका थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? और 2 मिनट में आ जाएंगे। इससे पहले कि वो आए, आई जस्ट रन थ्रू द प्रिलिमिनरी सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर हेडिंग, एंड इट्स समथिंग विच आई हैव डन इन ऑल एपिसोड सो फार, राइट? आज हम देखेंगे, विल डू अ क्रिस्टल गेजिंग इनटू अ radicalized Pakistan. Pakistan is radicalized, there's no doubt. It's a theocratic state as per its constitution, right? That's what Ziaul Haq made it. And we're going to discuss, and Mr. Sanjay Dixit has had tremendous exposure with people from across the border, and he's done his own research on the theocratical and theology of Pakistan. He'll come, join in, and we will share his valuable knowledge. Okay, uh, this series on future of Pakistan uh, is actually proving quite illuminating to me, because आज तक मैंने we have done 2 episodes, the rifts in the Pakistan army and the return of Imran Khan. What do these two tell us? I mean, संक्षिप्त में अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर रिफ्ट आ गया, अगर कोई म्यूटिनी हो गया या कुछ अनाप शनाप काम हुआ हो गया, तो पाकिस्तान विल कोलैप्स. The Pakistan army is the last bastion of the Pakistani state. And then it will disintegrate. How it will disintegrate, we don't know. Are there chances for the rifts to happen in Pakistan? There are. That's the beauty of the whole thing. There are full chances, because even today I was doing a bit of research. There is a vertical split between the veterans and the those who are in service. Within the service, there is a rift. Between the families of officers and the officers, there's a rift, because the families largely support Imran Khan. And the veterans also are divided, and a large number of them support Imran Khan. There is a rift between the top echelon of the army and the bottom echelon of the army. And within the top echelon of the army, there are games being played, because someone continuing is at someone else's cost, right? So there is a problem which is brewing up in Pakistan army, which we had analyzed. Then we had also analyzed what will happen if Imran Khan returns. If Imran Khan returns, our analysis suggests nothing will change. Nothing much will change. क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है. तजुर्बा तो है, क्योंकि 3.5 साल का तजुर्बा है, पर वो 3.5 साल में उन्होंने कुछ ऐसे खास किया नहीं, करिश्मा नहीं दिखाया, जिससे वो पाकिस्तान को जिस हालत में वो उन्होंने सत्ता संभाला, उससे he left it far below that, and I don't know whether he has the capacity to take it up. And he talks of a lot of things called Riyasat-e-Madina. He talks sometimes of religion. He talks of nationalism. He talks of izzat. He talks of foreign conspiracies. He talks of all things. जिससे वोट मिल जाएगा. But is it something which will, जो क्या ये पाकिस्तान को सुधर जाएगा? क्या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा जब ये सत्ता में आएगा? तो इसका कोई ये नहीं है. मैं पिछले 1 साल से उनका हर एक भाषण सुन रहा हूँ, तकरीबन हर तीसरा चौथा दिन उनका सुनता रहता हूँ. उन्होंने पिछले 1 साल, जब से वो सत्ता से बाहर निकाला गया, एक बार भी उन्होंने ये प्लान नहीं दिया कि पाकिस्तान का इकोनॉमी को कैसे टर्न अराउंड करेंगे. उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया
कि वो पाकिस्तान को कैसे इकट्ठा करेंगे। हालांकि he has been a polarizing figure. Thanks to him, the judiciary stands divided. Thanks to him, the army stands divided. Thanks to him, the political polarization is complete. And it is well known that he supports a lot of the Taliban. The Taliban or the TTP or the extremists, the radicalized elements of Pakistan are his his constituency, right? So, right. Welcome, Sanjay ji. Yeah, we'll let him settle. Till then, I'll continue. Right? Hello. I'm here. Yeah, you are good. I'll get you in. Right. Welcome, Sanjay ji. Good evening and welcome to Ghana Shot. It's a pleasure to namaste, and it's a I'm pleasure to sorry have you. because of a glitch No, with my no. computers. I got delayed. No, that's okay. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सब इनको बता रहा था कि हमने आज तक क्या किया, the rifts in the Pakistan army, we analyzed, and what will be the status if Imran Khan returns, because ये दो किस्से हमने किए हैं। आज हम बात करेंगे radicalization in the Pakistan army, right? I leave it to you. Just take us through that, and then we can discuss whatever. I mean, you can touch upon radicalization, the various types of radicalization, where it will lead us, and with a bit of history, of course, it will always be there. Over to you. Okay. Actually, we have to speak in Hindi or English? जो भी आप जिस तरीके से बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। आपने ही मेरे को हिंदी सिखा दिया तो हिंदी में मैं सबको बताना चाहता हूँ मिक्स करेंगे। इन्होंने मेरे को प्रोत्साहन किया कि मैं हिंदी में बात करूं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं था। ठीक है। ओके। अब एक्चुअली मैं रेफर करूंगा जो मेरी एक बुक है अनब्रेकिंग इंडिया। मुझे पता नहीं आपको अभी पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू शिप इट, क्योंकि मेरे पास कॉपी शॉर्ट हो गई थी। तो उसमें मैंने ये काफ़ी डिटेल में जो पूरा जो पाकिस्तान कैसे बना, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो आज की प्रॉब्लम है, टुडेज प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, वो दे गो बैक टू द बेसिक फंडामेंटल जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना। और वो पाकिस्तान का जो बेसिस है वो आप जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड द टू नेशन थियरी। अब ये जो टू नेशन थियरी है, इसको लोग कहते हैं कि साहब की ये जिन्ना ने प्रोपाउंड की, और कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना को इकबाल ने कहा। हाँ बिल्कुल, इकबाल ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। इकबाल ने उसको टू नेशन थियरी को सिखाया। इकबाल से पहले कहते हैं लोग कि साहब सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा। लेकिन जो फैक्ट ये है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे जो डिफेंस स्ट्रैटेजी की, यही एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि हमारे एक जो हमारे कंट्री का जो सेक्युलर नेचर है, या जो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया इमरजेंसी के टाइम पे, उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके, और फिर यदि हम ये देख रहे हैं कि सामने वाला रिलीजियस वॉरफेयर कर रहा है, even then we do not respond to it. We don't take recourse. It's not good enough. If somebody else is inflicting religious warfare upon you, you can't just stand up and say, well, I am secular, so I will not look at your religious fanaticism. हम यदि देखेंगे तो हमारी secular principles के साथ में जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो एक एटीट्यूड है वो हमने रखा है। वो इसलिए है क्योंकि हम टू नेशन थियरी की जब बात करते हैं, हमारी पूरी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा जाता है कि टू नेशन थियरी जो है वो जिन्ना ने उसके बेसिस पे पाकिस्तान बनाया। या और लोग जो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर सैयद अहमद ख़ान तक चले जाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि टू नेशन थियरी जो है इज़ द वेरी बेसिस ऑफ इस्लाम।
अब ये जैसे ही हम कहेंगे तो ये हो जाएगा कि साहब के अरे रे 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 आप तो जो है यू हैव वेंचर्ड इनटू द रिलीज इरा इनटू द ambit of religion, और आप तो जो है we can't talk like this in a secular country, this and that. But then if you don't want to talk about it, then you are condemned to remain ignorant. और जहां तक मुझे पता है कि मिलिट्री वॉरफेयर में ignorance is the worst sin that you can commit. If you're ignorant of the strategy, of the motivations of your enemy, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? तो ये टू नेशन थियरी जो है, इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। इसको मैंने कई जगह पे किया। अभी एक स्कॉलर हैं शकील चौधरी, उन्होंने मुझको बुलाया था और उन्होंने मुझको ये कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं। मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए उसमें, वो जो है टॉक वो जयपुर डायलॉग से पढ़ा हुआ है, और उसमें मैंने आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस मैंने 37 वो वर्सेस कोट की हैं जो उस पे पिंड हैं उस टॉक पे। शकील चौधरी का टॉक है, वो जयपुर डायलॉग्स पे है। वो 37 वर्सेस वो हैं जो दिखाती हैं अदरिंग ऑफ द नॉन मुस्लिम्स। सो अब मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाता हूँ। बाकी जब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी बेसिकली ब्रिटिश आर्मी थी। ब्रिटिश आर्मी से उसने अपना ट्रेनिंग जो है वो सारी उसकी ब्रिटिश थी, लेकिन जो पाकिस्तान बना था, जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स थे वो इस्लामिक थे। और वो इस्लामिक फंडामेंटल्स क्या हैं, आई जस्ट ब्रीफली रेफर टू इट। जो लोग डिटेल्स में इंटरेस्टेड हो वो जा सकते हैं और वो देख सकते हैं। वो मैंने 37 वर्सेस कोट किए हैं विच प्रमोट द अदरिंग ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, और पर्टिकुलरली उसमें भी स्पेशली हेटफुल टुवर्ड्स Hindus. the people who are not the people of the book, that means who are not Christians or Jews. So that includes Hindus and that includes India necessarily. तो अब आगे चलेंगे तो देखेंगे पाकिस्तान आर्मी का ये जब बात करते हैं, कई लोगों से बात करते हैं तो लोग बड़े अपॉलोजेटिक हो जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसको अवॉइड करते हैं। बट नाउ इट स्टेयर्स यू इन द फेस, क्योंकि अब ज़ियाउल हक के टाइम से जो पाकिस्तान आर्मी का मोटो था वो मोटो ही बदल दिया गया। पहले जो उनका मोटो था वो दैट वाज बेसिकली सेक्युलर ट्रस्ट, लॉयल्टी, समथिंग। अब उनका मोटो है, कहते हैं ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब ईमान जो है वो लोग मतलब नहीं समझते, इंडिया में ईमान का मतलब लोग नहीं समझते अनफॉर्चुनेटली। ईमान का मतलब जो है वो ऑनेस्टी नहीं होता है। ईमान का मतलब होता है फेथ इन अल्लाह। It is an Arabic term and that is the precise meaning of that term. Faith in Allah, that is the precise meaning of Iman. And taqwa is trust, and that is trust in Allah again. और फिर है जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद फी सबीलिल्लाह is jihad in the way of Allah. That means the violent kind of jihad. And that violent kind of jihad is basically now the motto of the Pakistan Army. अब पाकिस्तान आर्मी का जब ये मोटो हो गया तो फिर उसके बाद उसको जो है वो रिड्यूस किया गया राइटिंग में एज अ डॉक्ट्रिन। वो डॉक्ट्रिन है वो ब्रिगेडियर एस के मलिक, जो लेटर ऑन रिटायर्ड एज मेजर जनरल। वो ब्रिगेडियर एस के मलिक ने मेरे ख्याल से 75 या 76 में लिखा। उस वक्त पे ज़ियाउल हक वाज प्रॉब्ली द आर्मी कमांडर देयर, और ज़ियाउल हक ने उसका फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो ब्रिगेडियर एस के मलिक ने लिखा, एक पुस्तक लिखी, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। अब ये कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो है वो उनका वॉर डॉक्ट्रिन है। उनकी जो अकेडमी है, नेशनल मिलिट्री अकेडमी, जो काकुल अकेडमी जिसको बोलते हैं, अहमदाबाद में है जो, उसमें इट इज़ पार्ट ऑफ देयर कोर्स वर्क, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। वहाँ पे ये पढ़ाई जाती है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। अब ये कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर क्या है,
इसके बारे में थोड़ा सा एक अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नल ने इस पे बड़ा अच्छा एक जिसको हम कहें कि एक कमेंट्री लिखी है. दिस इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ सी मायर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी. इन्होंने लिखा है, वो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देता हूँ. और इसका जो है पूरा का पूरा जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा. यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. Yeah, I will. He has written a commentary on this. In India, this commentary was required. ये commentary किसी को लिखनी चाहिए थी. आज तक किसी ने नहीं लिखी. क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हमारे आर्मी कमांडर से भी जब मैं बात करता हूँ तो वो जो है वो जैसे ही ये चीज़ आती है वो दे बिकम डिफेंसिव. अचानक उनको लगता है कि कहीं जो है मुझको नॉन सेक्युलर गिन लिया जाए, हम बहुत सेक्युलर है. अरे भाई, आप सेक्युलर तो हो गए, सामने वाला तो सेक्युलर नहीं है ना. वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो तो आपको समझनी पड़ेगी. तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ जो मायर्स क्या कहते हैं, मैं अपनी कमेंट्री देने के बजाय इनकी कमेंट्री दे देता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत गहराई में जाके देखता हूँ, तो वो जो है समटाइम कैन डिस्ट्रैक्ट. तो लेट मी जस्ट रीड आउट व्हाट ही सेज. ही इज सेइंग critical themes of Malik's work is that just war or jihad in Islam is inherently spiritual warfare, religious warfare, and to the extent that Islamic forces have spiritually prepared themselves, they will strike terror into the hearts of Islam's enemies. अब वो ये क्यों कह रहा है? Because it is an integral part of the Islamic principles. 7.151 or 7.128. I'll as I go along, I will tell you the exact. एक मिनट, मेरे पास तो इधर खुला हुआ है, मैं बता ही देता हूँ ना. This is probably is 7.128. Okay. This striking terror into the heart is actually it's a Quranic injunction, 8.39, and also there is a Quranic injunction that says that all land belongs to Allah. तो अब ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखें. फिर इसका एक और भी the principles है. The Quranic principles are that man doesn't have any rights. All rights belong to Allah. And Allah has 3 fundamental rights over man that man has to submit to. And they are that, number 1, man has to fear Allah. Number 2, man has to ensure that only Allah is worshipped. And number 3 is that man is a slave of Allah. अब इससे जो है वो बहुत सारे principles आगे flow करते हैं. Because that then... This I read 7.128. It says that all lands belong to Allah. That is also basically coming from this. तो अब ये जो मैं कह रहा था, I said that will strike terror into the hearts. Now this strike terror into the hearts is a Quranic injunction. He mentions it here. Into the hearts of Islam's enemies. The terror, as Malik describes in detail, is both physical and metaphysical. इसको ध्यान देने की आवश्यकता है. Is both physical and metaphysical, because Islamic warfare is intrinsically part of a cosmic struggle for the reign of Allah's will on the earth between the forces of God, Darul Islam. Darul Islam is House of Islam, where the Islamic rule prevails, and that of Darul Harb. Darul Harb is House of War. This that place where there is not there is no Islamic rule, there is non-Islamic rule. Those who dwell in ignorance and darkness of the true knowledge of God. This, and then he has written a commentary. This parameters, the US Army War College quarterly email. He has written a commentary, which link I will furnish to you. Now, these are the basics, and as you go along, बहुत ज़्यादा इसने बहुत अच्छी तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल मायर्स ने बहुत अच्छी तरह से इस डॉक्ट्रिन को सम अप कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से.
अब इसको अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल साफ समझ जाएंगे जब कहते हैं कि साहब कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दे सेंड पीपल एंड दे किल आवर सोल्जर्स एंड टेक देयर हेड्स ऑफ। तो वो इसी किताब में जो इसका जो आपका ब्रिगेडियर एस के मलिक जो लिखता है, तो ब्रिगेडियर एस के मलिक के पहले पैरा में ये लिख दिया है उसने, इन दी वेरी फर्स्ट पैरा ही राइट्स, जहां से प्रीफेस लिखता है ये, उसे प्रीफेस में ही लिखता है। I'll just read out from the preface. Preface is, this is by Malik or by somebody else, so just check. No, not the author's note. Author's note, preface. Okay, preface is by a senior that time, Allah Baksh Ke Brohi. And what he says is, again sums it up. वो बोलता है इसमें, मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ आपको, preface by Allah Baksh Brohi, said broadly speaking, the war aims of any Muslim armed force engaged in fighting have also been stated in Surah Muhammad verse 1 and 4. Surah Muhammad is chapter 47, so 47.1 and 47.4. And what he's saying, he's quoting, those who disbelieve and hinder men from the path of God, God means Allah here, their deeds will Allah render astray from their mark. Therefore, when you meet the unbelievers, smite their necks. Okay. When you have subdued them, build a barrier against them thereafter in the time for either generosity or ransom, until war lays down its burden. Right. Then there is this concept in this book. It talks about just war. Now, just war is just another name for jihad. Yeah, I agree with you. Yeah. Then it says that an Islamic army fights a war to subdue oppression. अब इसमें कैच ये है कि people do not understand the Quranic language. Oppression, what we understand, we understand in Western terms as oppression means that you exploit somebody or you really suppress somebody or beat somebody up or whatever. Those are the definitions of general standard definitions of oppression that we know. लेकिन कुरान में ऑपरेशन का मीनिंग बिल्कुल अलग है। वो इसने भी आपके ब्रिगेडियर मलिक ने अपने पहले चैप्टर में ही रेफर किया है, और वो उसने रेफर किया है 29.68 और 20.9.69। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो अल्लाह की बातों को ना माने, अल्लाह की आयतों को ना माने, अल्लाह के दीन को ना माने, ही इज एन ऑपरेसर। ये जो आपके जैसे कुरान में मदीनन वर्सेस हैं, वो एक्चुअली ओवरराइड दी अर्लियर मक्कन वर्सेस, उसमें शुरू में ही जो एक बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है इसमें, सेकंड चैप्टर ऑफ द कुरान, इट्स कॉल्ड अल बकरा, उसकी 254 में लिखा हुआ है कि एन अनबिलीवर इज नेसेसरली द ऑपरेसर। राइट। तो ये जस्टिस, ऑपरेशन, जस्ट वॉर, ये सब जो है, ये डेफिनेशन हमको यदि क्लियर हो जाए तो हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि जिहादी आर्मी विच पाकिस्तान आर्मी नाउ स्टाइल्स इटसेल्फ एज, व्हाट इट इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अल्लाह's रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तभी आपको इमरान खान कहता मिलता है कि हमको यहाँ नया मदीना बनाना है। वो सारा का सारा ये सारी इमेजरी जो है वो इससे अरबिक पास्ट से लाता है जी। He talks of रियासत मदीना, रियासत मदीना, and he is in fact written 2-3 articles on it. I have read about it, and you find nothing which is concrete in it, except there is a lot of meaning in what you're saying. But unfortunately, this has not helped them.
No, it's not a question of not help them. It has not helped us either. What we have done is that we have kind of uh, ignored these things, and that has also created problems when we are dealing with the 0.5 front. As General Rawat, late General Rawat had said that we are fighting on 2.5 front. Yeah, this was So, half a front always. There's no so doubt this half about of it. front is also actuated by this philosophy. And No, because we refuse to look at it in our zeal for secularism, we run into problems. no, And I point it out almost every day to our no, home minister. no, I agree with you. What you know, what you're looking at the government. It is not that in the army we don't recognize this or we have not read about this. A lot of people, say of my vintage and my ranks and people are doing, have read this book of S.K. Malik and Quranic Concept of War. It is not that we don't understand, because to deal with Pakistan army, you have to understand how they are fighting, and this is their zeal and this is their mental makeup. That we have no doubt on it. But the fact remains, whether they want to make, rule the world, conquer everyone and all that, they failed miserably. Yeah, that is there. They have, वो तो यार वो तो बेवकूफ है वो और कुछ नहीं है, right? यही नहीं, yeah. In fact, let me, you see, if I'll take their own, I'll just show you a couple of this thing. You see this, ये उन्हीं का है, सबीर नजीर का, right? What Ziaul Haq, when he put the entire Quranic concept of war and everything Quranic in the constitution, and he made it a theocratic state, he started ruining, right? And today, what is Pakistan? Is this? You're looking at sectarianism. You're looking at all kinds of hate literature, everything. यहाँ तक, if you read Parvez Hoodboy, he says that even in science, they have brought Quranic concepts. मैं आपको बताता हूँ, कल yesterday मैं होस्ट कर रहा था खालिद उमर को. Okay. तो खालिद उमर, he has graduated from engineering university Lahore. Okay. जो वो कहते हैं कि this is the biggest and finest technical institute in Pakistan. Right. तो ज़ियाउल हक के बाद इस्लामिक स्टडीज जो है वो हर करिकुलम का पार्ट बन गया. Yeah. और ये जो इनकी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर, उसका भी पार्ट बन गया. तो उसकी जो फैकल्टी थी उस समय, वो खालिद उमर बता रहे थे कि जब वो पढ़ रहे थे तो उस इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो था हाफिज सईद. Okay. और वो करे कि वो उसने मेरे को कई बार फेल कर दिया क्योंकि मैं उसमें जो है बैठता नहीं था जाके. नाउ ही इज अ बैरिस्टर, ही इज गॉट ग्रेट प्रैक्टिस इन लंदन. लेकिन उस बार जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पास हो पाया क्योंकि वो हाफिज सईद यूज्ड टू डिसलाइक मी. इस तरह के काम करेंगे तो क्या होगा? Yeah, so I think, and not only that, you see, various strains of their religious problems. They have this Tehreek Labbaik, which is a strange movement which has started, which has got political overtones also. You look at Imran Khan. Sorry, I missed. TLP, Tehreek Labbaik. TLP is Barelvi. Barelvi. Okay. ये भी इनके अलग अलग शॉट्स हैं क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंट सेक्ट्स. क्योंकि हाफिज सईद जो है वो अहले हदीस है. Yes. और ये अहले हदीस वो वैरायटी है जो कि सऊदी अरेबिया में और कतर वगैरह में वहाँ पर जिसका विशेष प्रचलन है. दिस इज बेसिकली इन दी अरबियन पेनिनसुला. और ये आपका जो TLP, ये तो इसका हो गया. फिर दूसरा वाला जो इसका है, क्या नाम है इसका, ये तो लश्कर तैयबा वाले हो गए. जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं वो तो हैं आपके यहाँ वाले कश्मीरी वाले. right. और जो जैश मोहम्मद है वो है देवबंदी. Okay. तो ये अहले हदीस है, जैश मोहम्मद देवबंदी है. और
वो वाले जो हैं वो जमात इस्लामी हैं, जो जमात इस्लामी कश्मीर वाले। you have a Barelvi thing. और ये टीएलपी जो है ये बरेलवी है। Yeah. और बरेलवी की हिस्ट्री यदि पढ़नी है तो मेरी पुस्तक में बहुत डिटेल में दी हुई है, अनब्रेकिंग इंडिया में। और बरेलवी लोग वो थे जिन्होंने जिन्ना को सपोर्ट किया। सब कॉन्टिनेंट में 70 to 80% सुन्नी मुस्लिम्स और बरेलवी मुस्लिम्स। ये बरेलवी मुस्लिम्स वो हैं जो सूफिज्म फॉलो करते हैं और जो मज़ारों पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, जो कव्वालियाँ गाते हैं, और जिनको जो लोग हैं बहुत कई बार उनको गलत फहमी होती है कि ये बड़े पीसफुल लोग हैं। तो इन्हीं पीसफुल लोगों ने भारत के पार्टीशन में जिन्ना का पूरा साथ दिया था। जितने कत्लेआम हुए पार्टीशन में वो सारे के सारे इन्होंने किए थे। Yeah. After all, even now, because of blasphemy and all that, they have even hung people in public. Yes, and they are very heavy on blasphemy. Heavy, पागल है ये blasphemy blasphemy के लिए। पागल, blasphemy के पीछे. And the thing is that, of course, then you have this great Taliban, which is another force, a religious force, which is तालिबान is देवबंदी। Devbandi. No, but when you say Taliban, Devbandi, fine. But when you say TTP, there are various religious connotation. right? Yes, right. Today That's is okay. not the talk for that. No. But what we're talking is that you have so many of these, interacting sects, right? And these have always supported the politics of Pakistan, right? One. And secondly, in fact, the politicians have actually, brought forward this religion. It is not only Ziaul Haq, even Bhutto did it. Even Bhutto brought, religion in a big manner. In fact, if you go back in this, outlawed Ahmadis, said Ahmadis are not Muslims. It's there in the constitution. The constitution, right? Okay. And then, of course, this Imran Khan is a born-again Muslim. Whether he understands it or not is a different story. But he's a born-again Muslim. And he's going to come back into power if elections are held tomorrow, unless he's assassinated. Right? That's the reality we are facing. Now, in this time, he's very popular. That is popular. He's very popular. He's got about 60 to 70%. And I was just telling all of उसका मैं रीजन बता देता हूँ why is popular. वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो he follows that TLP kind of Islam. Correct. The Barelvi kind of Islam. Barelvi. And so because Barelvis are the majority, so they seem attracted towards him. Or otherwise, youth is also very heavily attracted towards him. Attracted to him. And you see, he is giving them some hope, which I don't know what that hope is, right? I have been following him. I don't know what hope he gives, but he is giving some hope. Maybe it is an anti-hope that they're going towards him because everyone else has become hopeless, so they're going towards him. So he'll come back. He's come back. He's going to be religious by nature. Plus, all these radicals are going to be hanging around there. Where do you think Pakistan is going to go? That's the more important thing for us. See, why? क्यों हम बात कर रहे हैं आज? कि how do we deal with this radicalized country? I think we just isolate it and keep the border strong and deal with it as per necessity. Okay. I don't think we need to interact with it. And one thing that we must be very clear, there are certain fundamentals about Pakistan that we should be very clear that Pakistan is a state, it is not a nation. I agree. That we should be very clear about because it fancies itself कि साहब हम उम्मत हैं और हम पूरी दुनिया का इस्लाम एक है, वो सब it's all hogwash. It doesn't work on the ground. Nation is people with common culture and all that. बिल्कुल, तो ये it is not a nation, it is a very strong state. Right. इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया is actually a nation. India is a civilizational nation. It has a history, it has an identity. लेकिन हमारा जो स्टेट है वो डिनायल में रहता है. ये इंडिया की प्रॉब्लम है. Yeah, that's our problem. Let's look at across. मैं उसको as a comparison दे रहा हूँ.
लेकिन Okay. पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन, इट इज अ स्टेट। और इंडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उसको एज अ नेशन ट्रीट करता है, और ये हमारी गलती है। Right. हमें इसको एज अ नेशन ट्रीट नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो यदि अलग अलग होते हैं तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में है। और वो हम Okay. तभी समझ पाएंगे जब हम ये मानेंगे कि भाई इट इज नॉट अ नेशन, इट इज ओनली अ State. स्ट्रॉन्ग स्टेट हेल्ड टुगेदर बाय इट्स आर्मी। On that, I have absolutely no doubt. I have no doubt. You see, after all, the people, the two majority people in that country, the Punjabis and the Sindhis, Baki, they are different people. And Culture, Pashtuns Pashtuns, are very right? important. They are They also are about 20% in the army. 20%. So they are also a third angle, which they are completely. The only thing which binds them together, two things. One is Islam, second is the army, and the third which binds them is an anti-India sentiment. On that, there's no this thing. Right. Now you leave the anti-India sentiment out. If you take these two, for the army and the rifts between their own nationalities, if I may put it, and this radicalization which is going on, do you see a breakup of Pakistan happening? बस आपने Or जो तीन चीजें बताई हैं यहीं से टेक ऑफ करता हूँ। yeah. मैं इसी से टेक ऑफ करता हूँ कि ये जो तीन जो बाइंडिंग इश्यूज हैं, अब इसमें एक आर्मी है, एक इस्लाम है और एक एंटी इंडिया है। Yeah. तो इसमें जो मैंने आपको कहा था कि इंडिया शुड कीप इटसेल्फ आइसोलेटेड, उसका आइडिया यही है। हम इनको बाइंड होने का, आपस में इकट्ठा होने का कोई, हम इनको मौक़िफ़ ना दें, हम इनको कोई पर्पस ना दें। Not there. So we have to be away from them. That's it. तो वी शुड बी अवे। जो इस वक्त हमने इनसे एक टाइप का हम कह सकते हैं कि भाई Hands off. डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, वो Yeah. कंटिन्यू रखना चाहिए। हमने टॉक्स इनके साथ नहीं किए हैं, वो नहीं करने चाहिए। कई I बार agree क्या with होता है कि ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है इन इश्यूज की, उसकी वजह से कोई लोग आते हैं और वो अचानक वो इंथुसियास्टिक हो जाते हैं और कि फिर जो बात है कर वो लो, ट्रेड आदर्शवादी कर लो। बातें करने हाँ, लगते हैं नहीं 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 और कहते हैं कि ये नहीं टॉक होना चाहिए, नेबर्स जो हैं वो हमारे साथ होने चाहिए, हमारे पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी या नहीं बदल सकते। इस तरह की ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। राइट, ये और तो ये बात कई ये लोगों ने कर लिया, बहुत समझदार लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसों ने करके देख लिया, सबने करके देख लिया और और वो बात नहीं बनती उनके साथ। वो और बात यही नहीं बात बनती। मैं जब भी आपके चैनल में आता हूँ यही बात मैं बोलता रहता हूँ कि भाई उनको छोड़ दो, वो छोड़ जो दो, भी होगा छोड़ दो उनको। अपने आप टूट गए तो टूट गए, रह गए तो रह गए, छोड़ जो दो, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। लेने देना नहीं है। आजकल अगर आप उनके यूट्यूबर्स को देखें, उनकी चैनल्स को देखें, तो वहाँ रोज़ चिल्लाते रहते हैं, हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, हमें भारत ट्रेड के क्यों साथ करें? करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, ये वो ये। नथिंग, हमें उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। We just leave them alone. So जस्ट लीव right. देम अलोन। एक So चीज़, तो okay. ये The एक other फैक्टर उसमें से हट गया। अब okay. The बची other 2 चीज़ें। अब 2 चीज़ें बची, एक उनकी मिलिट्री बची और एक उनका, मैं इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करके आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि yeah, इसका we'll क्या come back to होगा, it. उस पे पहुँचता हूँ। Yeah. तो अब वहाँ का जो इस्लाम है, जिसको जो इस्लाम इनका जो बाइंडिंग फोर्स था, वो भी बिखर गया है। क्यों बिखर गया है? क्योंकि ये जो मैंने आपको कहा, वो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, पश्तून जो है वो अपने आप को अफ़गानिस्तान वाला जो इस्लाम की वैरायटी है वो देखना चाहते हैं। सिंधी जो है वो अपने आप को एक अलग तरह से, उनका इस्लाम अलग हो गया है। और पंजाबियों का तो खैर कहना ही क्या, वो तो दुनिया के इस्लाम के वारिस ही हैं, वो तो अपने आप को अरब समझने लगे हैं। इसका Okay. Okay. तो ये जो इनके जो सेक्टेरियनिज्म, जो सेक्टेरियन
और इसका जो इन्होंने जो रेडिकल ग्रुप्स बन पाए, जो मैंने आपको बताया कि कोई अहले हदीस बन गया, कोई आपका सुन्नी बरेलवी है, कोई सुन्नी देवबंदी है, कोई एंटी शिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये जो इनका, आई रिमेम्बर क्रिस्टीन फेयर, उसकी जो किताब है एक बड़ी अच्छी लिखी है उसने, तो वो क्रिस्टीन फेयर बोलती है कि इट इज अ पेटिंग जू ऑफ जिहादीज। ओके। तो ये जो पेटिंग जू ऑफ जिहादीज है, इसने इनका जो इस्लाम वाला जो एका था वो भी बिखेर दिया है, और वो और भी अधिक बिखरेगा अगर इनको एंटी इंडिया करके, या कोई, या तो इंडिया इनको छेड़े, या ये इंडिया के ऊपर हमला करें, या कुछ इस तरह का काम करें। अगर वो ग्लू नहीं मिलता है तो ये और भी बिखरते जाएंगे। अब आ जाते हैं आर्मी पे। इस वक्त आर्मी में भी आपको डिवीजन देखने को मिल रहे हैं, जुडिशरी में भी डिवीजन देखने को मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी डिवीजन देखने को मिल रहे हैं, और सब इमरान एंटी इमरान हो रहे हैं। You see, in the army, which we discussed, there's a division between the veterans and the people serving. There's a division between the senior officers and the people who are junior. There's a division within the army between the serving officers and their families. There's also a division between the senior officers, because ye jo bhi niklega, some of them are supporting Imran for one simple reason. I mean, I don't know if anyone has told you on your channel. They're supporting Imran because if they support Imran, get him in, and somehow if Asif Munir is taken out on a technicality, that he actually retired when he was reappointed, and his appointment as chief of staff is null and void. If he's taken off, unka number aa jayega. So that is also there. So okay, I didn't know this. I was not aware of this. Yeah, so the divisions within the Pakistan army are at its peak, and that was why हमने जब ये पाकिस्तान का सीरीज शुरू किया था, the first thing which I tackled was the rifts in the Pakistan army. And if I say that Pakistan army is on the verge of a mutiny, I wouldn't be off the mark. Right? If the political situation... That is an interesting subject. We can discuss on Jaipur dialogues also. If that happens, if that happens, अगर वो हो गया कल के दिन, फिर तो ये नेशन बिखर जाएगा। और उसके साथ आप ये रेडिकलिज्म भी मिला दीजिए, और इनका जो रिलीजियस फ्रैक्शंस भी मिला दीजिए, प्लस देयर सब नेशनल सेंटिमेंट्स में मिला दीजिए। Where do you see Pakistan going? One, I'll come back to the same question, right? If it doesn't disintegrate, how will it exist? In what shape will it exist? Because that's what we are finally interested in. It will exist like Somalia. Okay, if it does exist. It does exist. मुझे ऐसा लगता है कि ये बिखरेगा, और बिखरेगा क्यों? एक तो क्या है कि जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इसके यहाँ बड़ी एक सीरियस जो प्रॉब्लम, इनका जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो इनका इस्लामिक रिपब्लिक होना या इस्लामिक डेमोक्रेसी होना। मैं इनके यहाँ जाता रहता हूँ, और कई लोगों से मैंने ये कहा कि भाई आपको अगर इस्लामिक ही बनना था तो आपको एक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी क्यों बनना था? आप अगर एक इस्लामिक कैलिफेट की तरह, एक एमिरेट की तरह, जो अमीरात जिस तरह से अफगानिस्तान में है, या अमीरात जिस तरह से यूएई में है या सऊदी अरबिया में है, तो आप भी अपने अमीरात बन ही जाते ना। मैंने अपनी किताब में डिटेल में लिखा है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बरेलवियों ने बनाया था। नोबडी नोज दिस। ओके, एक इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस 1946 में, पाकिस्तान के बनने से पहले, और उन्होंने एक 11 पॉइंट चार्टर बनाया। ये 11 पॉइंट चार्टर, ये जो बरेलवियों के जो ये हैं, ये अहमद रजा बरेलवी के जो बेटे थे, उनके एक पीर हुआ करते थे, मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी, और नईमुद्दीन मुरादाबादी की चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी। उस कमेटी ने ये 11 पॉइंट चार्टर, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इनका। और चूंकि इनकी वजह से ही जिन्ना को मास सपोर्ट मिला था, तो इनको ये पूरी उम्मीद थी, इनको ये पूरा विश्वास था कि यही एक हमारा गाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसी तरह से हमारे एक चलेगा निज़ाम। लेकिन
फिर क्या हुआ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जो ब्रॉड फीचर्स हैं वो आप ये मानिए कि वो लगभग जैसा कि ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ पे एक सुप्रीम काउंसिल होगी, उस सुप्रीम काउंसिल में जो सबसे बड़ा जो वहाँ पर मुफ्ती या जो भी होगा वो उसका लीडर होगा, जैसे वहाँ पे एक अयतुल्ला होता है, और वो जो है वो जो रिलीजियस गैदरिंग है जो शूरा जिसको बोलते हैं, वो शूरा उसको सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करेगी, जो सुप्रीम काउंसिल हेड करेगा। अब वो जो सुप्रीम काउंसिल है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगी, और वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगी, किस तरह से करेगी, उसको इलेक्शन करवाएगी, जैसे ईरान में करवाते हैं कि इलेक्शन करवाते हैं, फिर इलेक्शन करवा के उसको अपॉइंट करते हैं, या डायरेक्ट अपॉइंट करेगी, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। वो पूरे डिटेल्स जो हैं वो मेरी किताब में हैं उसके। तो ये इनका बेसिक एक गाइडिंग गवर्नेंस का मॉडल बना था उस वक्त। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग अपोज कर रहे थे, आप ये देखिए इसमें कि जो देवबंदीज जो थे उनका जो लार्जर फैक्शन था वो अपोज कर रहा था पाकिस्तान का बनना, और उसमें हुसैन अहमद मदनी जो जिन्होंने जमातुल उलमा हिंद बनाई, तो वो जमातुल उलमा हिंद जो थी वो बड़ा फैक्शन था, वो अपोज कर रहा था। उसका एक छोटा फैक्शन शबीर अहमद उस्मानी जो थे वो निकल के उधर चले गए। तो ये प्लस अबुल अला मौदूदी, मुस्लिम ब्रदरहुड फेम, अबुल अला मौदूदी, ये लोग अपोज कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर आपने पाकिस्तान तकसीम कर दिया, अलग कर दिया, तो जो अल्लाह की जो लार्जर कमांड है, लार्जर कमांड मतलब कि पूरे बर्रे सगीर, यानी बर्रे सगीर मतलब सब कॉन्टिनेंट की, पूरे बर्रे सगीर को इस्लाम में तब्दील करना है, वो रह जाएगा, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो वो दैट फियर वाज लार्जली करेक्ट। और क्योंकि अगर आज ये यूनाइटेड होता पूरा सब कॉन्टिनेंट, तो द प्रोपोर्शन वुड हैव बीन 2/3 1/3. Yeah, 1/3 Muslims and 2/3 Hindus. 1/3 Muslims and 2/3 non-Muslims. Yeah. तो उनका ये कहना था। लेकिन आप ये देखिए मजे की बात क्या होती है, पाकिस्तान बनता है, ये हामिद रजा, मुस्तफ़ा रजा, नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये पाकिस्तान जाते हैं इस उम्मीद में कि अब तो हमारा ही निज़ाम आ गया और हम जैसे कहेंगे, क्योंकि जिन्ना ने क्या किया था कि जिन्ना ने सबको, he promised goodies to everybody. Yeah, he gave nothing to anyone ultimately. He promised goodies to everybody. सबको, जो कत्लो गारत वाले थे सारे सूफी थे जिन्होंने कत्लो गारत की पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी जिन्होंने की, सुरावर्दी भी सूफी था, वो नवा खाली वाला जो चिश्ती था वो भी सूफी था, वो आपके उसके पहले जब ये आपका मपल्ला रेबेलियन हुआ था उसमें वो जो कादरी था वो भी सूफी था, एक कादरी सूफी था, एक सुरावर्दी सूफी था, एक ये इनके अलग अलग सेक्ट्स हैं ये, और ये चिश्ती सूफी था, और औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी था, और ये फतावा आलमगीरी फॉलो करते हैं सारे के सारे। दिस गाय इज ऑन रिकॉर्ड ओवैसी सेज कि वी फॉलो फतावा आलमगीरी, सो दैट इज नक्शबंदी टेक्स्ट। तो ये इनके जितने भी सेक्ट्स हैं ये सारे के सारे वायलेंट हैं, सारे के सारे शरीयत फॉलो करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कव्वाली गाते हैं। तो अब ये जो नईमुद्दीन मुरादाबादी और रजा अहमद आपकी मुस्तफ़ा और हामिद जो थे, ये भी गए पीछे पीछे, जो लोग अपोज कर रहे थे डिवीजन वो भी चले गए, शब्बीर अहमद उस्मानी वहाँ पहुँच गए, और आपके अबू अला मौदूदी वहाँ पहुँच गए। और आप ये देखिए कि अबू अला मौदूदी और शब्बीर अहमद उस्मानी तो वहीं रह गए पाकिस्तान में, और ये जो बरेलवी थे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के लागू कराने के लिए गए थे, इनको वापस आना पड़ा। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस्लामिक निज़ाम और रिपब्लिक, मुझे लगता है कि ये जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है ये भी इनकी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर मुरादाबादी वाला कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया होता तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के लिए बेटर होता। Anyway, that's history, but now they are where they are. Do you foresee them breaking? I do foresee them breaking.
I Okay. can't a path. I can't predict a pathway, and I can't predict timeline. But if they are not propped up again by the West, they will Yeah. definitely break up. Maybe in 5 years or 10 or 15, we don't know. Yeah. But so it's a long time और process. इसमें एक और ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये आता है कि धीरे धीरे वेस्ट इज लूजिंग इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट देम. Oh, West has lost its capacity. West is having struggling with Ukraine, right? So that is a problem. Even China, I don't think will go beyond a point with them, because if this toxicity goes into Xinjiang, वो भी मारे जाएंगे. So I don't think China will hedge its best bets with Pakistan. And this radicalism, with the way you explained it, is only a cancer which is going to spread. And if Mr. Yes, 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 Imran yes. Khan, and if Mr. Imran Khan comes into play, he's going to hasten it up. Am I right? मिस्टर इमरान खान कम्स तो ही विल डिवास्टेट इट फर्दर. वो तो Further. और भी बिल्कुल इसको ऐसी Right. तैसी कर देगा. So इसका एक थोड़ा सा स्पिन ऑफ हो सकता है. यहाँ पे दो तरह की चीजें हो सकती हैं भारत में, क्योंकि भारत में एक बड़ा तबका है जो पाकिस्तान को आइडलाइज करता है. क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, जो मैंने कहा कि ये जो आपका सेपरेटिज्म है या जो टू नेशन थियरी है, द टू नेशन थियरी कम्स फ्रॉम इस्लाम इटसेल्फ. तो वो सब जगह एग्जिस्ट करती है. मेरा बड़ा जो द पॉइंट दैट आई कोट मोस्ट ऑफन इज पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, इट इज एन आइडिया. yeah, that तो वो आइडिया Pakistan जो lost. भारत में एग्जिस्ट करता है, वो इनका डिवास्टेशन देख के उसके ऊपर दो तरह का प्रभाव पड़ेगा. तो इसमें जो एक थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा तबका है और जो थोड़ा बहुत भी ये मानता है कि लाइफ जो है वो इस दुनिया में भी है, तो वो तो इनसे अलग हो जाएगा. लेकिन एक जो दूसरा तबका है जो ये मानता है कि साहब की जिंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होती है, वो और भी अधिक रेडिकलाइज होगा. लेकिन वो एक प्रोपोर्शन में अगर वो 1% भी होगा तो वो 1% भी 20 लाख बनता है. Yeah, I go with you, and I'm sure तो someone उसके लिए भारत को वेरी स्ट्रिक्टली वो जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है उसको पढ़ के will. और बिना भटके और बिना सेकुलराइटिस से ग्रस्त हुए उसको उसी लेवल पे उसी हिसाब से टैकल करना पड़ेगा. Right. Good. I think we've had a very nice discussion. Shall we take some questions? We know now where Pakistan is going. We know the timelines which you laid out. And what we'll do is, I've done, this is a third episode. Tomorrow I'm talking with Tahir Gora on where he sees Pakistan is going. And then we'll continue with all this. And what I'm going to do is I'm going to take clips from all discussions, important clips which have come out in all discussions. And then we'll have some kind of a discussion. I'll play all that out and then we'll again come back and discuss this. Because I think we have to give more attention, rather than just talking of Pakistan breaking up or not breaking up, how you deal with this whole story. And this story is not going to end with, this season or next season or next season. What you said is very important. Most important thing I take from here is that this is a long-term thing over the next 10 to 15 years. And this is the time when India has to rise also. You have a toxic state which you have to leave alone, and you have to monitor how it's going to get disintegrated. You have to rise on your own. Simultaneously, you have to tackle an ideological enemy in the form of China. We have a tough task ahead, and that is why I'm doing this series. And after this, I'm going to do a series. After this, I'm going to do a series on China also, but we'll come back later. So I'll take some questions, right? Ehsan says, Jai Hind sir, it seems like Pakistan on the verge of further civil unrest. Their deep state's unconventional offensive attempts against India, especially via foreign assets, might increase. They seem desperate. Boliye. Theoretically, yes, but I think practically they may face difficulty
because as we know, their funds are drying up. The money is scarce, and it is affecting even the military rations. So, how much funding ISI can garner Yeah. is a question. Yeah, next, same question, another question by majority of India's problem from Pakistan are caused by the Pakistani Punjabi community, which also constitutes most of their deep state. They will never change their behavior towards India. I agree, but even Punjabi community, there are two streams there. Okay. One is the South Punjab community, and the other is the Northern Punjab community. अब ये Northern Punjab में से कोई there are about 7 districts which contribute almost 70% of its army, and they are the major problem areas. Uh, Largely, I go with what you say. They will not change their behavior, but then what happens if the country breaks into four? They lose all That will resources. They lose access to the sea. They lose access to mineral wealth, and much they more. lose even their territory to the Pashtuns. So they will be left to war within themselves, or their population, their agriculture. It's all unsustainable now. 70% of their revenue is contributed by Karachi. So if there is no Karachi, then it will become like Somalia. But then we'll need to strengthen our border fencing. Yeah, I agree with you. And we're going to do a program on water also. We're going to do a complete program. I'm going to analyze the water problem of Pakistan, because if you don't understand the water problem of Pakistan, you don't know where it is heading. Right. Quite right. Yes. Ask I've Sanjay done sir, why do you think? quite a few programs on the Indus Waters Treaty, Yeah, looked yeah. at this quite closely. It's the So, only major country, major in the sense it's a fifth largest population in the world. So it's the only major country in the world whose agriculture GDP has contributed to the economy is higher than the industrial GDP. yeah, I agree with you. I will discuss this because I have to do this and give figures. Why do you think Pakistan is obsessed with India getting to play cricket in Pakistan? Is it for money or to try and hold them to ransom, or it's something else? It's more an identity problem. Yeah, I agree with you. There's nothing more. Money, thanks a lot, right? Yes, money does matter, but Yeah, then money matters. identity is more important to them more Yeah, than anything else. right. Then, yeah, Ehsan says they never listen to Indian diplomacy. They have instigated all conflicts with India. The only language they understand is force. Even in using force, they have lost all contact. Yeah, it's a statement of fact. I agree with you. It's a Right. statement of fact, but right now they are not in a position to To do generate anything. conflict. Yeah. So Vikram says, sir, nowadays Pakistani YouTubers are trying to bluff Indians by doing scripted videos and projecting fake admiration towards India. Do you think ISPR could be involved in this? I'm not too sure. I've been watching and I've been interacting with the YouTubers for a very long time, and some of them who are now sympathetic towards India have had to leave Pakistan. Beggar ho gaye. I think Sanjay sir is absolutely right. Let Pakistan do trade with Islamic Biradar Hamsaya countries like Iran and Afghanistan. Don't do trade with Kafir India. Yes, Yeah, yes, yes. yeah, They yeah, do trade with us. They will go against Quranic injunction. yeah. So again, why is West unable to point out the hypocrisy of Pakistan constantly complaining about non-secularism in India while committing atrocities against religious minorities in Pakistan? That's a different toolkit. Yeah, It's a Soros toolkit because they they don't want don't. India also to rise. Yeah, That's a you see, factor. they want controlled rise of India. They want India under their control. See,
And they're more desperate now because they are losing control. Yeah. They can see what is happening. There is also another factor that is coming into the global economy, and that is called a de-dollarization. Yeah. If de-dollarization gathers apace, because even George Soros has gone on record, he says that we should have more numbers of reserve currency in the world because we cannot sustain chronic deficits in the United States. The United States is running a deficit of something like $33 trillion. Why? Yes. Because they just keep printing money and they have nothing to back it up with. They've transferred all their manufacturing to China. Now that manufacturing is shifting elsewhere, not going back to the United States. Yeah, it's going to come. So the world is now looking to go back to a pegged currency where there is greater transparency and greater justice in Yeah. currency valuations. But So let if us see, that because happens, which is already happening, in fact, it is already happening, it has been accelerated by their stupid act of seizing the currency reserves of Russia. of Russia. Earlier, they did it with Iran and Venezuela. At that time, the world did take notice, but then it didn't act. Now, after the seizure of Russian currency reserves, the world is acting, and China is proactive. The But there's a amount of problem with China. treasury bonds that China has liquidated over Yeah, the yeah. last They've liquidated 1 about year half or so, 50% of them. 50%. yeah, so that shows the world is heading towards de-dollarization, and then West will lose their ability to control, and they see India as the long-term rising power because India has all the ingredients, including an open society, that lead to progress. Uh, in fact, मैं बताना चाहता हूँ, tomorrow my article is going to come out on India's rise and geopolitics. What you're saying, I put all that there. And after that, I'll do a show on this very fact why India's rise is unstoppable. India's rise can't be stopped. It can't be stopped by the West. It can't be stopped by China. It can't be stopped by India itself. We have reached Quite that right. stage, right? So why and what are the implications of this rise and how we have to navigate ahead is something we have to see. But I'm going to write more of that a little later. But I just thought I'll share this with all of you. Who is confusing Pakistan? Is it those Muslims who converted from Hindu to Muslim previously? How to know these Hindus who converted to Muslim? Is there a certain surname? Pratik is doing his masters in London, no, UK. So Well, there is a way, of course. I mean, generally you can tell, but that will require a separate episode by itself. that is right. Yeah, I agree with you. Because then we have to deal with the entire Islamic history. Okay, Largely, I can just yeah, give tell you me an that. example is that mostly people who write Sayyid and Sheikh and such prefixes, they would usually be non-converts. The rest of them would all be converts. Okay, right. Then he says, sir, you mentioned in one of your programs, so asking it here, can any threat, artificial or constructed one, reunited the scattered Pak entities, army, ISI, judiciary? By Of I'm course, very India. clear, India. इसमें कोई दो राय नहीं है. That's why we've all been saying leave it alone. सड़ने दो, सड़ जाएगा पूरा. उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है. Right? Okay. What do you think of the TTP crisis? Off-pack border will keep on exploding. I don't This, see I any. think, the general can answer better. Yeah, I don't think this will change. Right? This will continue. Only thing is if There's Imran also Khan another comes. factor, this Uh, TTP crisis. yeah. The The, thing is that Imran Khan comes Afghan back. nationalism, Afghan nationalism is not going to be subdued there, and they Yeah. have linked up with the Baloch. Yeah. So That's a major factor now. So that entire western border is it's destabilized, destabilized. So you'll find that Pakistan will continue in this and destabilized Pakistan's state. response is curious. I mean, they haven't responded even after these people killed a brigadier. Can you imagine? Look, they don't have capacity to do so. As of now, they don't have the capacity to do so because उनके पास पैसा ही नहीं है. उनके पास
they don't have fuel to take vehicles. They have nothing. So that is why this is going to go further. Why do you? I mean, that's one of the reasons why I thought let me take a 360-degree look at Pakistan over a period of 1 week, 10 days. ISI has a very strong foothold in USA politics, caste bill in Seattle, etc., etc. Do you think this will affect India-USA relations in the future or present? Well, ISI is only a supplemental player there, because the major player there are the leftists, Yeah, and their motivations, uh, in some places, in some manner, they coincide with the motivations of ISI. But basically, that's a Soros toolkit. It's yeah, not really ISI toolkit. ISI can lend a helping hand there. yeah. I agree with you. ISI has got its limitations, but today ISI is more interested in what's happening inside. Let me tell you this: they are in no position to look out and do anything great because they are imploding from within. And all these things which I hear from all of you only reinforces the idea there is something happening in Pakistan which we need to think out of the box. Okay, rats leaving a sinking ship, Mr. Chima and YouTubers. So he caught the hint. Right. We'll take the last question. Inter-Pak, various Islamic factions and schools are out for each other. Blood. What is the future of this conflict? The future Well, of this conflict is another Yemen Pakistan, or another Yemen, yeah, Somalia. Somalia, and that is where Pakistan is heading. I like to, show one slide before I start off. These are the lines for food, and this is what I read in Dawn today. They say free food is temporary, poverty is permanent, and that's going to haunt them hereafter. And this poverty permanency is not going to change. And this is where their problem is, right? With this, I think we'll call it a day, sir. I thank you, Mr. Dixit, especially for coming on to Gunner Shot. We'll discuss more of Pakistan as we go along, right? And I'd like to thank everyone for who joined in. हमने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बात किया है, राइट? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ज्यादा हिंदी में बात करना चाहिए. इच्छा तो है पर उतना ही मैं बोल सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं बोल सकता. Unless you are in Jaipur dialogues. ठीक है. तो यहाँ हमारे चैनल में इंग्लिश से भी बात करने वाले हैं और हिंदी में भी बात करने वाले हैं, तो इसीलिए हम दोनों भाषा में बोलते रहते हैं ताकि दोनों को समझ में आए कि क्या हो रहा है, राइट? थैंक यू एंड जय हिंद. Thank Thanks a you, lot. sir. Thanks a Jai Hind. lot and Vande Jai Hind. Mataram. Vande Mataram. Yeah, Vande Mataram is important.